ओके स्टूडेंट्स, मैथ्स के बाद अब थोड़ा फिजिक्स करते हैं. राइट, 25th का ये पेपर है. राइट, 25th ऑफ जून मॉर्निंग सेशन की पेपर है ये. मेरे बहुत सारे बच्चे इस सेशन में थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ज़रा देखिएगा, फिजिक्स का पेपर है ये. राइट, मैथ्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, मेरे चैनल में जाके आप उसको चेक इट आउट. ओके, राइट. सो ये मैंने दो चार फिजिक्स के क्वेश्चन कर देता हूँ. राइट, बहुत आसान था वैसे, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं फिजिक्स का. राइट, सो लेट अस चेक दिस आउट कि क्या है ये. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स फ्री end of a spring shown in the figure. When compressed, the spring is stationary. Okay, so एक बॉडी आ रहा है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो. और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि you have got a spring, right? इसी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं. So you have got a mass, suppose, hold on. So you have got a mass, suppose, right? Just considering it as a mass. Okay. Then it comes with a certain velocity that is equal to half mv square, and this velocity is given, and that is 12. This velocity is given, and once it comes, the entire kinetic energy will be used up. But he is not saying, ये नहीं बोल रहा है कि वो बॉडी जाके सीधा रुक जाएगी, है ना. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आप देखोगे कि बॉडी जाके वो कह रहे हैं कि जाके रुक जाती है, बट यहाँ पे बॉडी जो है वो रुकती नहीं है. राइट, रादर क्या हो जाती है, वो बॉडी जो है वो आके एक सर्टन दूरी में जाने के बाद, राइट, कंप्रेसेस बाय कितना, बाय 30 सेंटीमीटर्स जाने के बाद वो यहाँ पे रह जाती है जब उसकी रफ्तार होती है 6 मीटर पर सेकेंड. सो दैट मीन्स दिस इज एंटायरली अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. राइट, सो जिस रफ्तार से वो आई वो एनर्जी दो जन मिलके खाई. एक द स्प्रिंग, द स्प्रिंग ऑफ द हाफ kx स्क्वायर, और दूसरा certain amount of energy still remains because this v doesn't becomes zero. Okay, तो इसलिए क्या करें, so इसलिए half mv square, okay, that will be equated with, right, it comes and strikes then half kx square, that is your spring, and then you have that kinetic energy, the remaining kinetic energy which is left, and that is equal to half mv square. So let is this, you can say this is v dash square because this v and this v are not same. Okay, so if you put the data half into mass, now mass is given as 0.5, so mass is given as 0.5, and velocity in the first case is 12 ka square, and that is equal to half. You need to find that spring constant k. X सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो इसको आप 30/100 कर दीजिए. राइट, half kx square, and then you have got the next term, and that is what is your half m. M again is 0.5, so you put 0.5 there, and with a v dash, and v dash is now 6, so this is 6 ka square. Now just have a look, this is 6 ka square. Okay, तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ पता है k को छोड़ के. Just you need to solve it. Okay, just you need to solve it. Just solve it. मैंने इसको solve किया है. So if you solve this, you are going to get k, which is to be as 600 Newton meter, right, Newton per meter. So this will be the result. Okay, so you can check that. Okay, तो ये एक important question था. Important क्या मतलब, one of the question of this term. Okay, जून का. Then we have what next एक ये वाला question है, और वो question कौन सा है? Difference of speed of light of the two medium A and B is this. Okay, so speed की रफ्तार बोल दी गई है आपको. जिनकी difference क्या होती है, उनकी difference होती है VA minus VB is equal to something given. Refractive index of the medium B is this, so mu is given to you, that is NB. Find the refractive index of A. C is standard, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Very nice. So this again can be solved in a very simple way. Okay, so किसका B दे रखा है आपको, right? So you know the refractive index is nothing but speed of light in a vacuum or in a free space divided by the speed of light in that particular medium. Okay, so if I can this is the refractive index of B, so I will say that the velocity of light in the medium B, VB, and that can be very easily calculated. Just cross multiply it, and I can get my VB to be as C upon this your C upon NB now, which is known to me now, right? So VB हमको पता है, C हमको पता है, और NB हमको दे रखा है, that is 1.37. You can put the data if you want. Okay, but this is my speed
एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे रखी है कि VA माइनस VB अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 7, राइट, और मीटर पर सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयरफॉर आई कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड मीडियम A, एंड दैट इज 2.6 into 10 to the power 7 minus of, this is minus, so this becomes plus of VB, and VB I have just calculated this, okay, VB हमने just निकाला है अभी, so this is my nothing but my VB, just check this out, okay. So इस तरह से मेरे पास VA आ गया है, और आपको निकालनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A क्या होगी. So refractive index of A is nothing but the speed of light upon the A के medium A के अंदर में speed की रफ्तार, light की रफ्तार की speed क्या होगी, and that is 3 into 10 to the power 8 divided by, right, this VA, and VA we have just calculated on top, and that is 2.6 into 10 to the power 7 plus C is 3 into 10 to the power 8 divided by mu B, that is 1.37. So you can get your result from here, right? So it's a simple calculation, right? थोड़ा सा calculation करेंगे तो you will get your answer as मैंने solve तो किया था कहाँ? Yes, 1.22. So you are going to get it as 1.22. So this will be the result of your second question that we discussed today. Okay, simple question. It should not take more than 1 minute. Okay, time बहुत बचानी पड़ती है हमें. ठीक है, time, right, plays a very important factor. Okay. Then what next? Then we have one more over here, a particle, half kgs initially at rest. Okay, so बार बार मैं बोलता हूँ कि initially at rest मतलब initially, immediately you make u is equal to 0 meter per second, initially at rest, and the mass is given to you, and that is 1/2 kgs. Very nice. So mass is given to you. अब एक फोर्स लगाया है आपने, दैट फोर्स इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स. सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली ये, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर. ओके, सो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. इट्स पोजीशन आफ्टर 2 seconds इज दिस. ओके, सो पोजीशन को भी इन्होंने वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है. सो पोजीशन क्या हो जाती है 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये उसकी पोजीशन हो जाती है. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती है, पोजीशन के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और u मेरी 0 है, सो इट इज स्ट्रेट अवे S विच इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. इट इज एग्जैक्टली हाफ AT स्क्वायर. यू कैन चेक दिस आउट. सो इट इज हाफ AT स्क्वायर. ओके, सो इसका मतलब मुझे अगर A पता चल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, और A निकालना बहुत आसान है, बिकॉज यू नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass is given to you, force is given to you, acceleration in terms of vectors अगर मैं लिखूँ, so vector acceleration is equal to F upon m. So I can put it over here and you can get your answer straight away. And therefore what I will do over here is कि हम अगर S निकालना चाहते हैं half A, what is A? A is the force vector upon m into T. T was given to be as 2 seconds again. T was given as 2 seconds. Yes, so T is 2 seconds. You can put it over here also in the data, and that is equal to 2 per square. Okay, so it's straightforward. Now put that value of S, that means the vector, right, of F, and that F is nothing but 10 I cap plus 5 j cap. This is the vector, force vector, with a mass 1/2, into 4. And therefore this is the result, and ये 4 2 कट गया, और मेरे पास बच गया क्या 40 I cap plus 20 j cap. and definitely this examiner शायद इसको A plus B j cap इस तरह से लिखने को बोल रहा है, right? If you see very carefully, he is saying, right, write it in this form, and you need to find the ratio of A upon B. The first term is A, so here A is equal to 40 and my B is equal to 20, and I need to find A upon B, right? I need to find A by B. So मेरे लिए A by B क्या होगा? So मेरे लिए A by B क्या होगा? So A को मैं डालूंगा 40 और B को मैं डालूंगा 20, and the result is, you cancel it out to, so the result is 2:1. So you can check your result, A by B. Clear? So 2:1. So this is the option, correct option. Fine. तो simple थे, fast. You can be very fast in these questions, right? You have to be fast. Okay, you have to consume time. You have to you can't consume time, right? You have to be very fast. Okay. Now इसको देखते हैं जरा. Acceleration due to gravity due to the earth. Height is equal to 2r. Height is equal to 2r for the source of earth to be the radius of the earth. Okay, r.
सरफेस ऑफ द अर्थ आर इतना बोल दिया है, ठीक है। तो हमारे लिए एम जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर, राइट, होता है ना। तो हम क्या करते थे, हम जी को लिख देते थे जी एम बाई आर, ओके, आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। बहुत अच्छा बात, बिकॉज दिस वॉज एम जी एंड वन एम विल कैंसल आउट, दिस विल बी काउंटर बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। बट हियर you are in a height, so gm by certain height, so r plus h you can write, or uska फिर square, and here my h is given to me as this, okay. So just replace it, gm by r plus your h, and if you replace it with this h को जगह पे मैं अब 2r रख दूंगा और ये स्क्वायर हो गई है, चेक कर लो is, and as a result, so I put this in the same color, okay, and 2r को ध्यान से देखिएगा प्लीज, राइट, 2r को, and this becomes 3, so gm upon 3r और उसका स्क्वायर, एंड और ये बन जाती है मेरे लिए 1/9 gm by r square, right, और gm by r square is small g, and that is 1/9, right, so can say 1/9 into g, so this has to be my result, and this is number 2, okay. So this is also done, simple one. Now next क्या है, next है force is acting on a particle, right, next is force is acting on a particle, तो force vector के फॉर्म में दे रखा है, on a particle this इतना kilometers, right, that means s is given to you, right, that means this s is given to you, displace हो गई, find out torque of force about origin will be, तो कितना torque होगा, okay fine. So if you want to find torque, force और displacement दे रखा है, तो this is pretty simple, okay. So अगर force और displacement दे रखा है, तो I can find it in a very straight formula based, right, isn't it? Yes. And therefore torque is equal to r cross f, if you write it in terms of vectors, because these are provided in vectors, okay. अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, so r is given as, oh it's simple sir, so इससे आसान नहीं हो सकता है, so this is r, that is 2i plus j cap minus 2 k cap, so this is my r and this is my f, and if this is my f, then that is 3i cap plus 4j cap plus 2k cap, so this is my force. So cross product करनी है simple, okay. So you just have to perform this cross product. So torque is equal to I, J and K, I, J and K, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, 1 and -2. Just इतना याद रखिएगा, R पहले होती है, right? Otherwise गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर आपका. So this is 2. So 3, 4, 2. So you can get your result. So यहाँ पे I है, यहाँ पे I 10, 10, 10 I है, 10J, 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 10J. But here got 5K, 5K, 5K and 5K, okay. So सब में अलग अलग है, करनी पड़ेगी, ये अगर कोई अलग नहीं होता तो अच्छा लगता. So that is equal to 2 minus plus 8, and that is 10i. So I have got 10i over here. So 10i. So this might be the answer. 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 चार हो सकती है, okay. Right. So better is को हटा ही देते हैं, हमारी क्या वाला part, okay. Now minus of j. Now let's talk of j then. So minus of j. So if you talk of j, so this will be 4 minus plus, that will be 3 into 2, and that is 6, and that is minus 10 j cap, okay. So minus का 10 एक यहाँ है और कहीं है, यहाँ पे भी है, तो 2 और 4 के बीच में कहीं होगा. Now let's talk of z then. Z या फिर k cap, what you write, k cap. So this is 8 minus 3, and that is plus of 5 k cap. So plus of 5 k cap. So this is your option, right? So इससे आसान नहीं हो सकती है. Direct formula based, you should know how to perform the cross product and simple question. Okay. Okay. So here is the next one then. The angle between the two vectors A and B is theta. A vector and B vector is theta. Then choose the correct option. The angle between two unit vectors. Okay. Don't forget that. That is unit vectors. Okay. So unit vectors का सबसे property पहले लिख लेते हैं. Unit vectors means magnitude is equal to 1 और B का भी magnitude vector का is also 1. So ये property है मेरे पास. And you need to find A plus B, A minus B. So A plus B, okay, mod value is equal to A magnitude of A square, magnitude of B square plus 2AB, है ना? Cos theta, 2AB cos theta, okay. And you have got under root to it,
Okay, you have got under root to it. Fine, you have got under root to it. So this is the result, and this is a unit vector. So I can say this is a plus b ka whole square, make it whole square. Okay, so 1 plus 1, 2, so 2 plus 2, this one, okay, don't forget this is the magnitude, जिसकी value 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगी, and there is 2 cos theta, right, 2 cos theta, root, under root हट गया ये, so you can take 2 common from here, 1 plus cos theta, and this will come out to be as 2 into cos theta by 2, right, cos theta by 2, but don't forget this is theta by 2 ka square, okay, theta by 2 ka square, but don't forget this to be as mod ka square, so this is mod ka square, correct? Fine, clear? तो अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो अंडर रूट आ जाती है, करेक्ट? Fine, so 2 will come out. And this is this, okay. Similarly, exactly the same way, if you have got a minus b का mod का square is equal to, so ये भी आप कर सकते हो, right? A minus b का mod का square, this also you can do. Okay. नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर दिया. Okay. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्चुअली फार्मूला में मेरी गड़बड़ होगी, फार्मूलाज में मैं मिस्टेक कर दिया, जस्ट हैव अ लुक, राइट. सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज दिस इज दिस एंड लेट्स पुट इट, एक्चुअली थोड़ा सिस्टमैटिकली रखते हैं इसको. ओके, एक्चुअली जल्दीबाजी के चक्कर में हो गया, कोई बात नहीं होता है. चलो 1 plus 1 plus 2 and that is equal to cos theta. Okay, that is equal to your a plus b का mod, clear? That is what is your a plus b का mod. Fine. And therefore what I will get now, under root of 2 plus 2 cos theta, and you can take 2 common from here. अच्छा वही तो था यार, a plus b सही किया था हमने. स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगी. ओके, स्क्वायर कर देंगे अगर मैं तो ये 2 बाहर आ जाएगी, and this is 1 plus cos theta, and that is equal to 1 plus cos theta, and that is equal to 2 cos theta by 2. cos theta by 2. फाइन, ये किया था हमने, सेम, नो चेंज. अब मैं सोचा कि चेंज होगा शायद. a माइनस बी सिमिलरली कैन बी रिटन एज, ये माइनस हो जाएगी यहाँ पे, माइनस हो जाएगी ये, एंड देयरफॉर यू विल गेट 2 sin theta by 2. ओके, सो sin theta by 2, and if you divide this, so a plus b whole square, हमको whole square नहीं चाहिए, I don't need a whole square, so you can eliminate this. Okay, a plus b का mod, right? So to under root this, so you can eliminate this. Okay, but how can I eliminate this? Under root होती है ना ये. Formula भूल गया. Now therefore a plus b and a minus b. Okay, so this divided by a minus b. From the answer you can also say, right? a plus b और a minus b. अगर मैं प्लस को ऊपर रखता हूँ तो I will get cos theta by 2. Forget the format, okay? Because this is not in square. तो square में नहीं है तो सीधा ये आ रहा है. Whatever might be the calculation, the process I have told you, just look for the formulas, okay? Sin theta by 2. So this is sin theta by 2. Okay, so it will produce tan. So I can get it as a plus b mod is equal to a minus b, और उसके साथ ये cos by sin, हमको tan चाहिए. So this is nothing but your cot, you can say cot theta by 2. तो पलटना पड़ेगा. That means a minus b is equal to a plus b tan theta, you can say a plus b tan theta by 2. So this is you can say cot or tan. So a minus b. So option B. ठीक है, एक बार चेक कर लो. Okay. Square नहीं है यहाँ. So if there is no square, so don't get indulge into a square term. Okay. So ये यहाँ पर आ जाएगी ये. Right. Next one क्या है? Choose the correct option for 2 0 non-zero vectors. Okay. So correct option, sir, B 2, because if you have got an A vector and you perform another A vector, so दोनों ही A vector है. अगर दोनों ही एक वेक्टर है तो दोनों की दिशा सेम होगी. Everything is same. You can say के ऊपर एक B है. Okay. Therefore the theta between them is 0. And whenever you perform a cross product,
whenever you perform a cross product, you come across sin term, and that is sin 0. अगर sin 0 होती है तो sin 0 is 0, and therefore दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आती है, right, for a cross product. Okay, so this was simple. Then what? Okay, so then we have got an element in AC circuit which produces only non-watt current. Okay, so non-watt current. Okay, so non-watt current, ये कैसे करेंगे हम, right? Let us check that. Okay, non-watt current. Non-watt current क्या होती है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, पावर के में दो चीज़ें होती हैं, राइट? सो एक होती है रियल पावर और एक होती है रिएक्टिव पावर. सो एक में होती है VI cos थीटा, cos फाई बेसिकली, और दूसरे में होती है VI sin फाई. ये जो sin फाई है ना, ये नॉन रिएक्टिव नॉन कंज्यूमेबल पावर होती है जो इंडक्टर और कैपेसिटर्स देती है. लेकिन ये जो पावर होता है ना, ये कंज्यूम हो जाती है, बिल्कुल राइट, और रेजिस्टेंस खाने में माहिर है. सो वो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस को बड़ा तगड़े तरीके से, ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारे करंट माने एनर्जी को बहुत कंज्यूम करती है. बट इंडक्टर कैपेसिटर दे डोंट कंज्यूम एनर्जी, दे ओनली स्टोर इट, गिव इट बैक, एंड दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइन. ओके, तो साइन को हम इसलिए इसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं. इसका यूनिट्स कभी कभी वार्स होती हैं, VARs. ओके, राइट, बट दिस हैज गॉट एन यूनिट व्हिच इज वॉट. सो ये जो है ये सोलली, तो ये जो हमारी पावर है ना, ये दिस वॉट. सो ये इसके लिए 100% कौन यूज होती है? रेजिस्टेंस, राइट, पूरी तरह से रेजिस्टेंस यूज होती है यहाँ पे. और इस जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगी कंज्यूमेबल पावर नहीं हो सकती है. तो कंज्यूमेबल पावर नहीं हो सकती है नॉन वॉट पावर्स. So that means if you look at the first option, it has got R, second option it has got R, third option sir itself is R. So ये हमारी नहीं हो सकती है, and therefore the correct answer is pure inductors, right? So this is simple logic. Okay, should not take more than 15 seconds. Okay, just reading the question जितना समय लगता है बस उतना ही समय लगना चाहिए. Now what about this one? A current through the cell in the given circuit. So you need to find the current through the cell. So this is the cell and this is the current that is flowing. Okay, very nice. तो कुछ लोग इसको KVL KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करके, लेकिन बड़ा टाइडियस सा मेथड हो जाएगा. 3 इक्वेशन बनेगी एंड यू हैव टू सॉल्व इट आउट, राइट. लेकिन इफ यू गो विद अ ट्रिक, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, राइट, इफ यू हैव, अगर आप JEE वगैरह के लिए प्रिपरेशन की है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वायर है, ये वायर के जो दो नोड्स हैं ये कोई काम के नहीं है. इनको क्या करो, आप एक साथ चिपका दो, राइट, because you don't have elements in between, right, and therefore you can combine them up. Now once you combine them up, this 5 and this 5 will be parallel. So if I try to draw the figure, it will be more clear. So ये मेरी point है. जो ऊपर में एक 5 जा रही थी, तो मेरे पास एक 5 इस तरह से थी, और जो ऊपर जा रही थी उसको ऊपर से घुमा के मत लाओ, बल्कि इसको ऐसे ले आओ. So this is 5 and this is again 5. Okay, and then with that you have got कुछ इसी तरह से, लोकेशन वाइज भी वैसे ही बना रहा हूँ मैं, ऐसा है. और ये वाली नेटवर्क, ये वाली नोड, ये दोनों सेम है. सो नाउ योर 5, एक जो बड़ी वाली 5 है वो कुछ ऐसा दिखेगी. नाउ यू कैन चेक योर रिजल्ट, राइट, एंड हियर यू हैव कनेक्टेड योर वोल्टेज. सो व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड इतनी आसान तरीके से ये दी गई है, मतलब सोचने वाली बात है. आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये 5 और 5 पैरेलल में लगी हुई है, और जब भी कोई पैरेलल में रहती है तो वो हाफ हो जाती है. सो दैट इज 2.5. और अगर नहीं होता है तो ऐसे करके देख लीजिए, 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5. और ये भी अगर पसंद नहीं आता है तो 1/5 + 1/5 इज इक्वल टू 1/R. सो जो भी मेथड लगाना लगाइए सर, इट विल कम आउट टू बी एज 2.5, एंड 2.5 इज नथिंग बट 5. ओके, सो दोनों सीरीज में लगे तो दोनों जुड़ गए, 5 हो गई. तो दैट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास एक 5 बच गई, और ऊपर में भी एक 5 थी मेरे पास. ओके, सो दिस 5 and this 5 is in parallel, so again it will be halved and will be converted into a single resistance of 2.5. Okay, और सेल का वोल्टेज कितना है? 5. so this is 5 volt, and it is pretty simple. Now you have to find the current through this cell. Hold on, if you have to find the current through the V is equal to IR. So V is 5, I don't know, and R is equal to 2.5. So it is I which is equal to 5 by 2.5. So you can cancel this out, and the result is nothing but 2 amperes.
So not more than 30 seconds or right maximum for 60 seconds. उससे ज़्यादा समय नहीं लगनी चाहिए. If you are prepared, if you're going for a KVL and KCL, then that is a different issue altogether, right? Okay. So this is one more question. और एक question है मेरे पास, and that is about this latent heat. Okay. So 50 grams of steam, right? तो इसके में मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या होती है कि होती सिंपल है, लेकिन ये जो गेम है ना, ये जो खेल है ना, इस कैलोरी का है, right? And the answer is always in joules. So the big trick is don't forget to put at the end you have to multiply your answer with 4.2, that is precisely 4.18. Okay, so then only it will be converted to joules. All the results are in calories, they are in grams, right? You can check this out, it is in grams, so no need to convert it. And simply my heat energy is with respect to latent heat is m into L, and specific heat के form में m into C into change in temperature. All the data are directly given, right? This is pretty simple, sir. That is 50 into the latent heat, and the latent heat is given as 540 plus m, again 50, right? And you can see they are in grams, so not a big issue, sir. There you are keeping the same units. L, that is C. C specific it is 1, and change in temperature. So earlier it was 100, and now it is converted to 20. That is 100 minus 20, and that is nothing but 80, and you can get your result. Okay, मैंने किया है इसको. अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो I will get it as 31 excuse me, right, 31 kilocalories, right? You can see 31 kilocalories, but I don't want my answer in calories, I want it in joules. So what you do, sir, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये जूल्स में आ जाएगी. ये 4 देख लीजिएगा, किलो, get rid of kilo, right? And finally you are going to get it according to my answer is 13 into 10 to the power 4. So fourth one will be the correct one. Okay, so this was again a simple one, right? तो ऐसा मैंने अलग बात कुछ नहीं था सबने अब तक. Okay, now next देखते हैं. Let's check the next one. In which cable line of terahertz frequency will be transmitted? So twisted pair सबसे कमजोर वायर होती है as far as the transmission is considered. बैंडविड्थ बहुत कम है. कोएक्सियल केबल, so if you rank them, सबसे खराब सर ये, right? सबसे खराब, then your what do you call this, coaxial, then twisted coaxial. Normal wire मैंने मैंने really ये debatable topic हो जाएगा कि normal wire क्या है. तो precisely देखिए 100 terahertz is huge. Okay, so ऑप्टिकल फाइबर, जब मैं फाइबर पढ़ाता हूँ तो मेरा पहला फीचर्स में दे ऑपरेट इन टेराहर्ट्ज रेंज. द वेरी फर्स्ट फीचर कम्स आउट टू बी टेराहर्ट्ज रेंज. तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी. नाउ व्हाट नेक्स्ट? Two intensities of two light, one is I, another one is 9I, meet at P and Q. In phase difference between two waves at point is diameter and Q. Okay. So मेरे पास दो इंटेंसिटी है. Let us make two cases now. Okay. So दो केस बनाते हैं. एक केस है केस 1 और एक केस है केस 2. So पहला वाला केस में two intensities, right? One is I and another one is 9I. So in both the cases, one is I, another one is 9I. Okay. So if the phase difference, in the first case, my theta is pi by 2, and in the second case, my theta is pi. So if you look at the expression of intensity is I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos theta. So this is the expression. Oh no, this is the expression of your what do you say, intensities. Okay. So intensity की ये expression होती है. Okay. 2 के साथ अगर मैं इसको देखूं तो just put it over there. So if I put it over there, I plus 9I plus 2, so this becomes 9I square under root, don't forget under root. And in the first case it is pi by 2 cos 90. And if you see cos 90, so cos 90 this term becomes 0, and this is 10I. And this is my I, which is equal to 10I. So you can say that I1, okay, better to say I1. Next is I2. So I2 is nothing but again I plus 9I. So I plus 9I plus 2. Now this will play an important role over here. 9I into I. And now this is cos pi.
Now this is interesting. Cos pi is, that is cos 180 degree is -1. So here I have got tan I. Minus will be generated and this is 2. और अगर मैं अंडर रूट को हटाता हूँ तो मैं 3i मिलेगी मुझे. अंडर रूट को हटाऊंगा तो this becomes 6, that is 4i. So this is my I2 which is equal to 4i. So the ratio of intensities of P and Q, the intensities of P and Q, P कौन था? P पहला वाला था, right? At point P is this. Okay, so this is my case. This is my P point and this is my Q point. So ratio of intensities of P and Q, that is P and Q. So you can put it P and Q, P1 and P2 or P1 and that is 10i upon 4i. So this will cancel out and become 5/2. So the ratio will be 5:2. You have it? 5/2. Yes. So the ratio of intensity is 5/2. So this was also a pretty simple one. Okay. So ये सारे questions जो है ये सब आपने अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो it is already there. Okay. Now B, magnetic field B of an infinite wire at a distance r. If current I is constant in the wire, okay, B is equal to mu naught I. B is equal to mu naught I upon 2 pi r. Okay. So you can say B is inversely proportional to R. So what is this, sir? Clear? So this is again a simple one, right? इससे आसान नहीं हो सकता है सर, इससे आसान नहीं हो सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता है. Please check this out now. अब पिछले वाला भी और ये वाला भी, right? A ball of a terminal velocity. Now terminal velocity क्या होता था? पहले ये थोड़ा सा याद करो आप. Right? वैसे याद करने की जरूरत नहीं है ये सब. Directly you know the format, put it. Okay? Terminal velocity actually कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में या फिर गैस में, हम एयर में, गैस में किसी में भी फेंकते हैं तो एक सर्टेन नीचे आने के बाद, वो सर्टेन नीचे दूर जाने के बाद उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड है टर्मिनल वेलोसिटी. दैट इज व्हाई जब उतने ऊपर से रेन ड्रॉप गिरती है हमारे बॉडी पे तो वी डोंट गेट हर्ट, राइट? अदरवाइज यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट कि ये बहुत हर्ट कर सकता है. ओके, सो अगर मैं इस v को देखूंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी v जहाँ तक मुझे याद है 2/9 डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड इनटू, नीचे में ईटा आती है, राइट? नीचे में ईटा आती है और एक टर्म आती थी, यूज़ कर रहा हूँ मैं आर, और एक टर्म आती थी मेरे पास, क्या आती थी वो, जी, और आर स्क्वायर इज डेफिनेटली देयर, राइट? इज द मेन पार्ट, राइट? सो दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो यू कैन गेट योर रिजल्ट फ्रॉम हियर itself. सो अगर फॉर्मूला पता है, सीधी सी हो जाती है, तो वहाँ पे बैठ के आप दिमाग नहीं लगा सकते हो. दैट्स एज सिंपल एज दिस. ओके, क्लियर? Okay, sir. So the wavelength of a emitted photon of ions from the ground state, right? So ये ground state वाली question है. So सबसे पहले मैं बता दूँ 10 to the power 10 minus 10 को ये एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने वाली रूल, तो उसको लास्ट में यूज कर दीजिएगा. और हमारा इसका फॉर्मेट क्या होता था? सो 1 by lambda is equal to r. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? तो फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, लिथियम है ये 1. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो दिस आई विल गेट इट एज दिस एंड देयरफॉर 1 by lambda is equal to r. आई एम गोइंग टू गेट इट एज 1 by r is equal to r, मुझे मिल जाती है r. ओके, और उसके साथ एक z स्क्वायर, n तो 1 मिलेगी n के साथ, और क्या होता था z स्क्वायर. सो दिस इज माई z स्क्वायर. ये r ऊपर होती थी कि नीचे, दैट आई फॉरगॉट टू चेक दिस आउट. R बिल्कुल हमारी नीचे होती थी. सो दिस वाज स्क्वायर. ओके, फाइन, ऑलराइट. सो दिस वी हैव इट. ओके, सो R, ऑलराइट. तो इन दिस केस योर लिथियम के लिए 1 by lambda, यू रिकॉल इट इज z is equal to 3. सो दैट इज इक्वल टू 9r. सो दैट विल कम आउट टू बी एज 9r. बहुत अच्छा बात, 9r. So here is my lambda, which is 1 by 9r. So put the values of r over here, and r will come out to be as 1.097 into 10 to the power 7 होती है मेरी. एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए आप, तो I have calculated it. So it will come out to be as 0.012 into 10 to the power minus 7. Okay. Now you convert it into angstrom and you will get your result, right? एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 10 to the power minus 3 कीजिए और नीचे भी 10 to the power minus 3 कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, क्लियर? सो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाएगा लैम्डा के बारे में. ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, द वेवलेंथ. ऑलराइट,
ओके माइनस प्लस ओके। हाँ ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये एंगस्ट्रॉम वाला पार्ट जो है ना, ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने वाला रूल एक बार रिकैप कर लीजिएगा। आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ ओके। The ratio of the speed of the electron in the third orbit of hydrogen and helium ions. So ratio of the speed, velocity is directly proportional to z by n. So velocity की अगर बात करते हो तो proportional to z by n. So अगर मैं ratio of the velocities of electron moving in the third orbit of hydrogen और कौन helium. So z by n. So hydrogen का z 1 है, third orbit है. हीलियम का हो गया हमारा हीलियम का हो गया हमारा 2 और थर्ड ऑर्बिट है एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 राइट। थर्ड ऑर्बिट है z by n ओके, z by n ओके एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 राइट। इतना आसान था ये क्या? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑर्बिट फ्रॉम द हाइड्रोजन यस राइट 1/2 ओके ठीक है राइट। कभी कभी एक्चुअली विश्वास नहीं हो पा रहा है ये जेई वाला है ओके, सो फॉरगिव मी फॉर दिस ओके। नाउ why photodiode used in reverse biased? Small change in the minority carrier produces a high value of current in the reverse bias. Point change in the minority carriers produces high value in the current in the reverse bias. Small change in the minority carriers are 2 sir produces high value of the current in the reverse bias because ये reverse bias में रखा जाता है ताकि उसके अंदर ऊपर रोशनी गिरे और सरफेस एरिया बढ़ जाती है राइट। रिवर्स बायस में होने की वजह से डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, मोर एंड मोर लाइट कैन बी अब्सॉर्ब ओके। Fine, sir. Correct answer for the relation of RMS between speed and most probable speed. Speed and most probable speed. Speed and most probable speed. Okay. तो दो चीज़ है ना, तो एक होता था 3/2 और एक होता था 1/2 राइट। एक होता था 3 माने into 3 होती थी, एक बार 2। So V अंडर रूट ऑफ 3 V RMS is equal to 3 आती थी और दूसरा वाला जो है V probable में 2 आती थी। So if I say V RMS that is equal to 3/2 सर ऑप्शन है सर 3/2 RMP देख सकते हो ओके। सो यू कैन गेट योर रेशियो। अगर पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है तो इसके साथ RT/m डाल दीजिए, RT/m so RT/m and then just divide it, get your answer. Okay sir, so one more done. Now what about this one for the equivalent circuit between A and B? So if you look at the equivalent circuit of A and B, अगर मैं okay, this was also simple. जो JEE की तैयारी की है उन सब के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल में लगी हुई है राइट। मेरे सेशंस ज्वाइन कीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ये बताना, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे कोई काम का नहीं है बिकॉज दिस इज शॉर्टेड। So I will be left with only one 8. So 8, 8 and 8 and with that you have got one more 8. So they are connected in parallel and that is 8 plus 8 plus 8 and that is equal to 24. So 24 microfarad and this is in series. So 24 into 8 divided by 24 plus 8 that is 32. That is 32. Okay. तो अगर मैं काटता हूँ 8 से, so 8 से काटूंगा तो 4 and that is 4 is equal to 6 and therefore it is 6 microfarad. Okay, so whenever you come across this right parallel में क्यों लगाया, just go through my sessions, you will find क्यों parallel में लगी हुई है। and moreover ब्रिज नेटवर्क्स भी ऐसे ही नोड लेके देखा जाता है बिकॉज जब भी ये शॉर्ट होती है दैट मीन दिस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाती है, तो उस कंसेप्ट को यूज करते हैं हम यहाँ पे। देन व्हाट एल्स यू हैव गॉट, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन दिखा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लेंथ डिस्टेंस L and 2L from an infinite charge, so infinite charge sheet, okay, considered sheet of the surface area sigma A है और एक पार्टिकल है L दूरी में, एक पार्टिकल है 2L दूरी में। So electric field of the surface density will be, so E is equal to sigma upon 2 epsilon naught होती है। It doesn't have any format of R, distance, X है ही नहीं, so it is independent of L actually। So therefore आप अगर सरफेस की दोनों की बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दोनों में सेम रहेगी। So that is this, because ये अलग है ये भी अलग है and that is 2 epsilon, so it will remain same। So this is different, so this will remain same। Okay, बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट करते हैं लाइट सर्च ऑफ इंटेंसिटी दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ C इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर और म्यू नॉट की. सो ये भी आप कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की आर के साथ कर सकते हो. सो दिस इज अनदर ये, बट इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा इंसिडेंट टाइम एंगल है, सो इट विल नॉट पास टू द नेक्स्ट मीडियम, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो क्रिटिकल एंगल का हेल्प लीजिएगा इसका. Condition of critical angles, right? Resistance of 2 ampere and before when the heat produced is 3 ampere. Okay, ठीक है. Heat is equal to H is equal to power into time and that is V. हमें क्या क्या दिया हुआ है? करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, हीट दे रखा है, टाइम देगा, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस सेम रखेगा. ओके, यूज I स्क्वायर R. दो केस है. ओके, सो एक केस में H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R इंटू T1 डिवाइडेड बाई सेकेंड केस R2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R इंटू T2. Just put the data over there. Just put it. It is as simple as this. Just put it, right? You should be very excited जब आप कर रहे होंगे ना ये वाले questions. ये इतने आसान बोल दिया ना लड्डू. Okay. बहुत आसान. Unexpectedly easy. I don't know how. Right. करने को इच्छा नहीं कर रहा. चलो, no. Come on next. Sir. Electric field in a magnetic field is given by this. Then intensity of the electromagnetic wave is this. Then intensity I half epsilon E square C. Sir, क्या है सर ये? Direct format है सर. 1/2 epsilon. Epsilon is 8.86 into 10 to the power minus 12 into E 445.7 into उसका square into C 3 into 10 to the power 8. Sir, get your answer, sir. आसान है, बहुत आसान है. और कितना आसान चाहिए आपको सर? इससे आसान नहीं मिलेगी जेई में. क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग.